welcome back to Chasing the Target, one of the most awaited series of the year. मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ, वैसा ही सिचुएशन है अभी इंडिया का, आगे पीछे हो रहे पूरे बॉयज. लेकिन most awaited series, India versus South Africa. Mustafa, excitement building up each day. Just 5 more days to go for the first T20. थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे स्क्वाड्स के बारे में, अनाउंसमेंट जो लेटेस्ट हुए. ऑल्सो WPL का भी ऑप्शन है, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं. इंडिया के वुमेन्स का भी स्क्वाड्स अनाउंस हुए थे हाल में. एंड आई थिंक आज उनके कोच भी एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए थे, जहाँ पे ही मेंशन कि भाई एडवांस एग्रेसिव क्रिकेट ब्रांड, वो हमारा ब्रांड है, स्टफ लाइक दैट. सो काफी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए. बट पर्सनली मुस्तफा भाई, आई नो यू वेरी मच मोर पम्प्ड अप फॉर दिस देन आई थिंक एनीवन. आई नो वर्ल्ड कप चलेगा, आप देयर इज नो पॉइंट ऑफ लुकिंग बैक एंड स्टफ लाइक दैट. आप मूव ऑन विद द गेम एज वी ऑलवेज डू. But India versus South Africa T20 wise, head to head, looks like a fantastic battle. Yeah, I mean, देखो, Test cricket is the real cricket. मेरे हिसाब से is always the exciting one, especially if you're a cricket purist, you enjoy the game. तो 5 दिन का, especially जब आप सना कंट्री में खेलते हैं, आप जब साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में खेलते हैं, because वहाँ पे pitches change होते, weather change होता, and it's almost a fairer contest between bat and ball compared to subcontinent या Middle East and stuff. So I really enjoy Test matches in countries, in the Sana countries. Really excited for it. India have never won in South Africa मेरे हिसाब से series, तो ये पहली बार होगा. अगर हुआ तो been waiting, कितने सालों से हम लोग वेट करे. 2006 में श्रीशांत almost gave us that. In the last one, Rishabh Pant almost gave us the series win. But this time around, the test, both teams have rested their big players in the T20s and one days, the white ball format, so that they can focus on red ball cricket. अगर आप देखें, Bavuma and Rabada, they're both not playing T20s and one days. They're waiting for the test cricket. And same thing, Virat Kohli, Rohit Sharma are not playing. So it should be a high class contest, the test. But yeah, first looking at the T20, बहुत important है, because World Cup आ रहा, अभी से तैयारी करना जरूरी. I know just World Cup finish हुआ and everything, but if you're looking at it from a T20 point of view, you don't have much time. You only have like 6-7 T20s to go. तो यहाँ से तैयारी शुरू हो रहा. And these conditions might be different to West Indies, but at least you'll understand who's performing, who's not under pressure in foreign conditions. And बिल्कुल आपको एक चांस मिलता है to go out of their team and क्या है उनकी टीम T20 स्पेशली फॉर्मेट में. They look dangerous. बहुत ज्यादा टैलेंट है यार, बहुमा and stuff like. ओहो सुदीप, how are you sir? पिच अभी नहीं बोल सकते हम वहाँ पे आए तो, लेकिन बाउंसी ट्रैक, जूसी बॉलिंग रहने वाली है, मजा आने वाला है बैट एंड बॉल के बीच में कॉम्पिटिशन का. लेकिन अगेन मार्क्रम है, डॉनोवन फेरेरा है उनके पास, अच्छे मार्को यासन, हेनरी क्लासन, कि ये लोग क्या कर सकते हैं T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में. हालांकि ये सभी हाल में सूर्य कुमार अच्छा लीड करे इंडिया के टीम को विक्ट्री को. बट दिस इज गोना बी अ वेरी 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 टफ कॉम्पिटिशन फॉर इंडिया एंड इट्स गोना बी गुड. जैसे मुस्तफा बोले, अच्छा प्रैक्टिस रहने वाला है फॉर द T20. एंड अगेन आपके पास IPL है, अच्छा टाइम है प्रेप करने के लिए. इट स्टार्ट्स नाउ. It's always good to have a good challenging competition before the actual World Cup. Yeah, 100%. And you're up against some talented South African cricketers. I'm surprised कि Brevis नहीं है squad में. I would have expected him in the T20. मेरा उसका नाम नहीं था, but yes, they do have Donovan Ferreira. We talked about Tristan Stubbs. I think these guys will be waiting. Even Bartman, he's done well. ऐसे T20 में अगर आप देखो, he's giving consistent performances. So they do have some players as well. T20s में in particular, मेरे को one day का समझ में नहीं आ रहा होता, because अभी World Cup खत्म हुआ, उसकी जरूरत नहीं थी. I think you could have added a test match instead of that, but we'll get to that when it comes. But yeah, the T20s, it's all about gaining momentum, having a game plan, and keeping one eye on the one day World Cup. I think T20 World Cup, sorry. तो आप changes करेंगे शायद, मगर अभी जो players खेलने वाले, they also have a chance कि भाई अगर उन लोग dominate करें South Africa में, they will put their name in the hat, right? For the T20 World Cup, it's different performing for India compared to performing for IPL team. तो मेरे हिसाब से ये बहुत important रहेगा. South Africa का अगर मैं देखा, उन लोग भाई home conditions में, especially अगर test matches देखे, they make pitches to their favor also, like how India do. And I think they also don't hold back. They're like, भाई, they make it very seamer friendly. They make it difficult for the batters. Their own batters struggle, but their seam attack is so good and they exactly know where to pitch the ball. कि वहाँ पे क्या होता है मालूम, when you see that seamers get excited and you start varying your length a bit. कभी आप बहुत pitch कर देते या short या बहुत ऊपर pitch कर देते. South Africa, you have this certain length, and sometimes the away team struggles to find that, whereas South Africa, they know exactly where to pitch it, and it becomes very difficult. 180 to 250 becomes very competitive in South African conditions. So, and these players, Rabada, आपके Jansen, and these guys will be ready. They'll know exactly where to pitch the ball, and the pitches will favor them. It will be difficult for batting, but at the same time, there is value for your shots. ऐसा नहीं है कि भाई
it's a total dust bowler, like you can't hit or anything. आप runs भी मार सकते हैं, so the batters also have to be aware. It's not only about surviving in South Africa, it's about scoring too. आप देखो विराट कोहली जो 150 मारा था 2000 आई थिंक 18 में जो मारा था हार्दिक पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप था, इंडिया लॉस्ट दैट गेम बट ही स्कोर्ड 150. हाउ डिड ही स्कोर दैट? अटैकिंग काउंटर अटैकिंग क्रिकेट. सेम थिंग विद ऋषभ पंत जो अभी 2021-22 में जो इनिंग्स खेला था वहां पे ही स्कोर्ड 100. इट वाज अ काउंटर अटैकिंग. सो ओवर देयर इज वैल्यू फॉर योर रन्स बट इट इज चैलेंजिंग. तो it's not about just surviving. आपको जहां opportunity मिलती है, you have to go for it. You can't just play because one good ball and your number is. And that's where it's going to be interesting. See श्रेयस अय्यर क्या करते हैं, particularly obviously bouncy wickets अगर है, और हमारे को मालूम हो टाइम ना अगर मानो या ना मानो, he is fallen to the short ball. And again आप यही देख सकते हैं कि भाई he's probably not having the वो होता हर आदमी को कि भाई एग्री नहीं करते, बट कहीं ना कहीं है उनको प्रॉब्लम. बट दिस इज द चांस फॉर अंकुश सिंह, जितेश शर्मा अगर उनको मौका मिलता है, विच लुक्स अनलाइकली ऑब्वियसली बिकॉज आपके वाले ईशान किशन है. बट ये जो बच्चे जा रहे हैं, इन लोगों के लिए एक्सपोजर अच्छा है. इफ दे परफॉर्म देन इट प्रॉब्ली ओपन्स अप द गेट फॉर देम टू प्रॉब्ली बी इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, जो अच्छी एंड यही है कि भाई अपॉर्चुनिटी हमारे यंगस्टर्स यूजुअली ग्रैब करने नहीं करते. एंड दैट्स व्हेन आपको फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली ये नाम याद आते हैं, आपको मोहम्मद शमी याद आते हैं. तो अभी जो है सिचुएशन, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड, अपना क्या बोलते हैं, रिंकू सिंह, इन लोगों को तो मैं बहुत कीन हूं देखने के लिए. फास्ट बॉलर फ्रॉम साउथ अफ्रीका दैट आई एम गोइंग टू बी मोस्ट एक्साइटेड टू वॉच इज, जो वर्ल्ड कप में मेरा अटेंशन कैच करा, जेरल्ड कोएटली. आई थिंक आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी हिम. एंड वो 150 से कम डालता नहीं भाई, सो दे माइट नॉट मिस नॉर्थ के दैट मच, दो वो इंजरी से साइडलाइंड है. बट ओवरऑल T20 फ्रेम ऑफ थिंग. बट यस, मेरे को भी यही है कि भाई ओडीआई थोड़े कम करके आई थिंक आप टेस्ट रखना था, मजा आता है साउथ अफ्रीका में, उसमें मजा आता था. बट आई थिंक फुल फ्लेज टूर है तो you have to be prepared. आपका इंटरनेशनल सीरीज है तो you have to whatever is there on your plate आपको खेलना है. तो T20s में also वहाँ पे let's see how the pitches play because I know that test matches is going to be it will be conducive to fast bowling, लेकिन T20s में उन लोग के grounds भी थोड़ा सा smallish है compared to other. तो वहाँ पे अगर it's a good wicket to bat on, we've seen AB de Villiers in the past, we've seen Jack Callis, all these guys really make use of these small boundaries and it should be interesting I think. And आप जो रिंकू सिंह इन लोग के नाम लिए राइट, उन लोग के बहुत बड़ा एक्सपोजर है, फेल करे या नहीं करे, बट दिस इज अ प्रॉपर टूर अवे फ्रॉम होम अगेंस्ट अ इंटरनेशनल टीम. ठीक है, एक दो प्लेयर्स रेस्टेड है, लेकिन फिर भी आई थिंक ये कंडीशंस में खेलना उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात है. एंड at the same time also what I like this time around is that from the test point of view आप जो दो तीन खिलाड़ी हैं, शुभमन गिल, उन लोग 8 ओवर भी खेलने वाले, so they will be acclimatized. आप देखो साउथ अफ्रीकन जो प्लेयर्स है, some of them are missing the last T20 because they're going to play a first class game with red ball. तो India are now also doing that. अगर आपको टूर में सक्सेसफुल रहना है, you have to play warm up games, you have to practice. या कंडीशंस एक्लेमेटाइज होना बहुत जरूरी है. तो क्या होता है, पहला टेस्ट मैच आप हार जाते हैं, देन सेकंड टेस्ट मैच यू हैव अ बेटर, यहाँ पे यू हैव नो स्कोप बिकॉज़ इट्स ओनली अ 2 मैच सीरीज. तो पहले बॉल 1 से यू हैव टू बी ऑन द बॉल. वही ना मुसा कि मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स आप देखो इंडिया इन दिस कैलेंडर हैव प्लेड एट होम, तो उनको ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं है दूसरे टाइप ऑफ पिच को, अपार्ट फ्रॉम टर्निंग विकेट या वही जनरल फ्लैट सरफेस. तो आई थिंक अच्छा है कि भाई आप वार्म अप खेलो, बाउंसी विकेट खेलें. सुदीप दादा पूछ रहे हैं आपको कैसे हैं आप, हाउ आर यू? I'm good, thank you. How are you, sir? Hope you're doing well. वो भी बोल रहे कि भाई विराट कोहली फ्लॉप हो सकता है. विराट कोहली फ्लॉप हो सकता है. अभी he's gotten some good rest. Test matches में अभी he will want to always prove a point. He's not won a tour in South Africa. He was very close as captain. I think as player उन्हें तो भाई टारगेट करेंगे कि जीतना है ये सीरीज. तो देखना पड़ेगा. I think he has a decent record in South Africa. ऐसा नहीं है कि बुरा है. लेकिन हाँ, like let's see how he goes. Next match I think will be on Sunday, India का, so India South Africa. I think पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 14 दिसंबर या कुछ है नहीं, तो वो 2 दिन बाद होगा मेरे हिसाब से. आई थिंक नहीं 2 दिन नहीं, 3-4 दिन बाद रहेगा. प्लेइंग 11 क्या होने वाला है वो 1-2 दिन मैच से पहले थोड़ा सा विल टॉक अबाउट दैट. बट मेरे हिसाब से जायसवाल शुड ओपन द बैटिंग. इफ शुभमन गिल इज इन द T20 स्क्वाड or is not, if he's not then नहीं तो he's there, so maybe जायसवाल एंड शुभमन गिल. पर गायकवाड़ को भी फिट कराना है यार. मेरे हिसाब से गायकवाड़ अच्छा प्लेयर है. He can change gears. ठीक है, उन्हें कभी कभी स्लो खेल लेता, बट ही इज अ गुड एंकर ऑप्शन एंड नॉट दैट टाइप ऑफ एंकर विल स्लो एवरीथिंग डाउन. बट आई थिंक उसको भी ग्रूम करना चाहिए. उन्हें बहुत अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से गायकवाड़ भी. ये कि भाई आई थिंक वही ऋतुराज जिस तरीके से खेला, इट्स लाइक ही नॉकिंग डाउन अदर, बट शुभमन हैजंट डन मच bad in T20 scheme of things as well. So it'll be hard for I think Lakshman या Dravid जो भी जा रहे वो टूर पे as a coach. I think Dravid जा रहा है शायद ना. Yeah, he's become he's become extension मिल गया उनको 1 साल का. या so
You can't coach IPL and Indian cricket मेरे team हिसाब से नहीं, he is not going to. because कहीं खबर तो ये नहीं है कि वो लखनऊ छोड़े या कुछ ऐसा कुछ वो थे नहीं कभी लखनऊ में, कहाँ छोड़ने लखनऊ के में 99% हो गया ये वो बोल रहे थे नहीं, बट वो अभी नहीं तक था. तो नहीं हुआ था Because if शायद. you see Ravi Shastri also, he was not a coach of the IPL team or he didn't commentate or anything like that. So if your Indian team coach is focused on that, आपका 2 month break रहता, मतलब scouting वॉटिंग कर ले सकते, but आप आराम कर सकते घर पे. So I think he will take that Do you as. agree with the extension of the 1 year? Rahul Dravid? I see. I personally have a lot of criticism for him and everything like that. But I think, look, they reached the finals. You can give him one more shot and see. And Asia Cup. But then you've lost also one Asia Cup and a T20 and one T20 World Cup and a World Cup. You've lost more than you've won. You won one Asia Cup. You lost 3 tournaments, and you've also lost a series to South Africa away from home. You've आई थिंक 1 or 2 अदर, या न्यू इंग्लैंड के साथ जो लास्ट मैच था वो भी उन्हें था शायद कोच, एंड यू लॉस्ट दैट गेम एज वेल एंड इट वाज 2-2. तो आई थिंक देयर इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ही लॉस्ट. सो व्हाट इज दैट 5 टूर्नामेंट्स दैट ही इज लॉस्ट. तो आई थिंक दैट हिज उनका जो रिकॉर्ड है इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट बिकॉज देयर इज नॉट मच टाइम. आप सैक तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम बिल्कुल नहीं है, आप सैक कर सकते हैं, मगर भाई दे दो उसको एक और चांस एंड उसके बाद खत्म, गुड बाय. अगर नहीं जीता तो देन वी कैन थिंक अबाउट इट. आई थिंक राहुल द्रविड़ हिमसेल्फ इज मोर कंफर्टेबल इन द एनसीए कंपेयर टू इंडियन टीम बिकॉज उसका घर वर वहीं पे है एंड ही इज वेरी गुड with the youngsters. I think जो उन्हें इंडिया ए और अंडर 19 का काम करा, that you have to give credit to Rahul Dravid. And there is nothing, I'm not saying कि like he's done badly for India, but he could have done much better. I think the opportunities that they had, the squad that he had, he should have won at least 2 trophies. Yeah, I think the only thing like अगर आप ज्यादा like उनको थोड़ा लीनिंग शोल्डर देना चाह रहे, मे बी उनके पास इंजरीज काफी थे, बुमराह नहीं था उनके पास ज्यादा टाइम, और मे बी आप बीच का मिडिल ऑर्डर भी उनका श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के. अब इंग्लैंड में क्या है, इतना ज्यादा लोग हैं, इंडिया में क्या है वो एक्सपोजर, वो लेवल के प्लेयर बहुत कम है. नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं. आई विल नेवर गिव दैट एक्सक्यूज बिकॉज भाई हर वक्त बोलते इंडिया 3 टीम खेल, आप नहीं बोलते, मगर आप हर जगह देखो इंडिया 3 टीम खिला सकते, 3 T20 की टीम खिला सकते हैं, इनके पास इतना टैलेंट है. आईपीएल देखो, ये देखो, वो देखो, एंड नॉट ओनली इंडियंस, इवन फॉरेनर्स से दैट इतना टैलेंट रखे, अगर आप एक ट्रॉफी भी नहीं जीते 3-4 साल में, मेरे हिसाब से इट्स नॉट गुड इनफ. बट बिकॉज देयर इज लाइक थोड़ा सा देयर इज नॉट मच टर्नओवर गैप, तो मेरे हिसाब से आप खिला ले सकते हो उसको. आई मीन दे सकते कोचिंग, बट आई पर्सनली वुड लाइक टू लुक at someone else after this T20. अमित भाई भी आपको हेलो ओ अंटा है क्या बोल, रिपब्लिक 1 नंबर. तो मेरे हिसाब से हाँ, लाइक आई थिंक राहुल द्रविड़ का ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जीतना, स्पेशली टेस्ट मैच सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो जीत गए, दैट विल गिव हिम कॉन्फिडेंस आल्सो गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर. एंड T20 World Cup, भाई, I don't see India as favorites like one day. T20 is a different format. I don't think India's T20 team is as strong as one day is the strongest suit. Then I would say Test, then T20. I think T20 is India's weakest suit. Even though you say IPL है भाई, ये है वो है, चेन्नई सुपर किंग्स है, उन्हें है, फलाना है, ढिमका है, मगर मेरे हिसाब से अगर आप maybe you have some thing. I would keep second and maybe Test is good, so I'll keep Test first, T20 and ODI maybe. नहीं यार, ODI में भी अच्छे हैं तुम्हारे यार. T20 कहाँ से that bad? I mean in bilateral. देखो, आप एशिया कप T20 आप फाइनल भी नहीं, सेमी आप ग्रुप स्टेजेस में आउट हो गए. आप एक T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेजेस में आउट हुए. आप एक T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 10 विकेट से हारे. मैं टैलेंट वाइज सोच रहा हूँ खाली वो बच्चा. मैं नहीं, आप ये एज इंडिया वर्सेस अदर नेशंस देखो, मैं इंडिया इज बेटर देन I would say most teams in one day's test, apart from maybe Australia or England or something like that. That's like वहाँ पे final में जाके choke कर लेते. But पाकिस्तान का देख लो, I think India is better than Pakistan in one day test, but Pakistan is a better T20 team. That is maybe a very thing opinion, very extreme opinion. Not many people will think, but India's T20, I don't. You need to dig deep to understand what set your Pakistan. Not really. आप खाली उठा लो T20 World Cup. वो लोग बोलेंगे हाँ भाई देखो T20 World Cup में विराट ये मार दिया, वो मार दिया. Like you can't base it on 1 या 2 innings against Pakistan as a whole squad. देखे अगर T20 team बहुत अच्छी है. Yeah, no, I'm just basing it on how Pakistan performance in the last 10-15 T20s. मेरे हिसाब से not 10-15, like 10 years in T20s compared to India, they're more consistent. आप 2007 से उठा लो, वो जो even the one Pakistan lost, they were in the final. Next one लोग final जीते, 12 में सेमीफाइनल खेले, 14 में शायद नहीं खेले, इंडिया फाइनल खेले, हार गई, फिर 16 में नहीं थे, फिर उसके बाद since then they've been in semi-finals, finals. अबीर भाई पूछे what timing as per IST match will start. 7:30 IST शुरू होगा T20 on the 10th of December. और अगर कल क्रिकेट देखना है तो सुबह
या और सुबह 9 बजे आपको बांग्लादेश न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट रहेगा, आई थिंक मीरपुर में ही रहेगा वो. अगेन इट बी लाइक साउथ अफ्रीका जो वहाँ कर रही है, वहाँ बांग्लादेश यहाँ करती है. यहाँ पे रैंक टर्नर बना के खाली ताइजुल इस्लाम को बॉल दे देते. दीज टू टेस्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रो कबड्डी का पूछ रहे सुदीदा, प्रो कबड्डी नहीं आता भाई, मेरे को तो नहीं आता. मुस्तफा भाई शायद वो जयपुर पैंथर्स ये वो एक जमाने में देखता था मैं, तेलुगु टाइगर्स. राकेश मालूम होना अभी भी खेल रहा नहीं खेल रहा, आई डोंट नो. राकेश या जो उन्हें सेकंड या फर्स्ट सीजन में मौत डाला था. So yeah. The pro kabaddi, maybe I will try reading upon that a bit more. But these two tests will be very important for W. Bilkul, it will be very important in the cycle. And if you get a victory out of these things, it will be immense boost, confidence booster as well for India as a squad. What about Shai Hope? क्या ओ भाई धोनी से बात कर लिया भाई, उन्हें धोनी उसको पीस ऑफ एडवाइस दिया कि कंपोजर रखो, यू नो माइंड काम करके खेलो, डोंट, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी जहां आप रन्स बना सकते हो, खाली वो अपॉर्चुनिटी. तो आई थिंक वो अगेन धोनी मास्टर स्ट्रोक तो नहीं बोल सकते, बट शाई होप इवन अगेंस्ट इंडिया, अगर आप याद रखो मुस्तफा, जून में अच्छा कैप्टनसी करते करते ही वाज ट्राइंग टू फाइट बैक as the only person in that West Indian. एंड भाई इन लोग के पास इतने प्रॉब्लम्स है, कोई खेल रहे नहीं. आप देखे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का फिर से इशू था, फिर भी उन लोग मैच जीते थे. एंड यू नो 120 और 70 balls in a 50 over is not that easy. There was only 5 wickets remaining. Romario Shepherd, this is how this man gets IPL contracts. When the IPL is coming close, the auction is coming close, उन्हें मारता भाई. उन्हें न तो नहीं मारता होता, लाइक वो 2-3 में जब ऑक्शन आ रहा भाई वही हफ्ता फोड़ता उन्हें. जो मारा भाई, he smashed the crap out of the England bowling and he got them into the game, and then Shai Hope continued. I think it was a very good partnership between both of them. And England, man, I don't understand. Josh Butler after winning the T20 World Cup थोड़ा ठंडा हो गया, but overall उसका record देखे, win loss ratio, I think it's in the deficit. I think he's losing more than he's winning. It's also all close encounters that it's like मैच जीतने वाला मैच. ये तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट याद है आपको जो हारे लास्ट क्लब क्वालिफायर्स के, they have to win. So ये finishing of the games has been West Indies biggest problem. They come in a good मोमेंटम में अच्छा ला लेते हैं मैच. इंडिया के अगेंस्ट भी एक बुरा जीतते जीतते बुरा हार गए. तो आई थिंक यही प्रॉब्लम है, वेस्ट इंडीज आर नॉट एबल टू क्लोज. मुस्तफा, पाकिस्तान loses matches because of Babar and Rizwan. I mean, they lost one T20. I remember that Asia Cup they lost because of them, because especially both slow starts there थे. And you know, both I would say the semi-final against Australia and the final against Sri Lanka, they lost those respective in Dubai matches. I was there at the ground and I saw that they slowed it down a lot. But there are, I wouldn't say every match they would lose, because they've won also games, a few here and there. But they've also lost because of captaincy. They've also lost because of fielding. They've lost also because of bowling. If you see the T20 World Cup, Australia के against वो जो मैच था, ठीक है बाबर रिजवान थोड़ा स्लो खेले होंगे, जो भी है, but मैच आपके was in the bag. Matthew Wade was dropped. Hassan Ali. And then Shaheen Shah Afridi also, okay, ठीक है कैच ड्रॉप, उन्हें जो बॉलिंग करा उसके बाद it was not good enough. He lost all his confidence and उन्हें भाई लैप कर रहा था, इधर कर रहा था, उधर कर रहा था. So I think Pakistan in pressure moments have given up games and they've made mistakes, whether it's in the field or the bat or the ball, because of pressure. And you know, I think you can say similar things about India, but in specific, if you're talking about Pakistan, they've made individual errors in crunch situations. अब एशिया कप फाइनल उठा लो, उसमें जब you know, they had श्रीलंका 64-5 I think, उसमें हसरंगा का पार्टनरशिप लगा आई थिंक धनंजय दिसिल्वा के साथ. वहां पे शादाब भी उन लोग जो मिसफील्डिंग करे, यू नो कैचेस ड्रॉप करे, वहां पे भी फंस गए थे वो मैच में. एंड दे लेड श्रीलंका made 160 and then yes, Rizwan slowed it down with the bat completely. But अगर आप, if you took your catches and everything, you wouldn't be chasing it that much too. I think it's overall they crack under pressure in crunch situations. फील्डिंग across all the, अगर आप फॉर्मेट्स देखो, पाकिस्तान की काफी पोर रह चुकी है. वर्ल्ड कप में भी इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट दे वर हैविंग लीकिंग रन्स. एंड अगेन अगर आप साउथ अफ्रीका का भी मैच उठा के देख लो, या यू नो ऑस्ट्रेलिया का भी मैच उठा के देख लो, आप पोर फील्डिंग थी, वेरी बैड फील्डिंग फ्रॉम पाकिस्तान. तो या फील्डिंग है, कैप्टेंसी है, इट वाज अ लॉट ऑफ इशू इन द कैप्टेंसी एज वेल, फील्ड प्लेसमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट एज वेल. बट या जो आप अभी बात करें थोड़ी देर पर मुस्तफा भाई के, लाइक इंडिया के पास ज्यादा स्क्वाड यू नो बना सकते इतने लोग हैं, वो है. आई थिंक अब अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज देखो, रोहित शर्मा जो टेस्ट कैप्टन, केएल राहुल जो ओडीआई कैप्टन, एंड सूर्या और हार्दिक, सूर्या ही रखो अभी तो नाउ यू सी दैट दे कमिंग टू दिस सॉर्ट ऑफ इंग्लैंड माइंडसेट, के दे आर मेकिंग different teams. According to you, they are not. According to me also, they're not. But like now that if you see it just on paper, Rohit Sharma is leading one team, KL is leading one team, and Surya is But leading the one difference there is that England will not play those players also, like in the T20 World Cup, more often than not. Yeah, they won't mix and match too much. Like if you see the test team, they won't have test players in the T20 team that much. So I think apart from Ben Stokes, they won't really, and even now they might, they might not. But if you ask me,
they're doing it right now because they want to rest Virat Kohli and Rohit Sharma. अगर आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिला उन लोग को, फिर आप बोल सकते हैं स्प्लिट हो रहे फॉर्मेट्स, फिर आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं yes, you have three different formats, three different captains, and it might help also, it might not help. मगर problem ये है, you will never be satisfied as an Indian team. You take this young team, you will say भाई रोहित और कोहली खेलना था, जीतते थे. You take Rohit and Kohli, you will say कि भाई youngsters को खिलाना था, इन लोग को कितने chances दे रहे. As long as you don't win, you will always not be satisfied. There will be half the people saying कि भाई ये गलत था, half the people saying ये सही था. अल्टीमेटली वही होता है ना भाई, एज अ कोच या कैप्टन आप खाली आप एक असम्पशन डाल के आप वो गट फीलिंग या जो भी आपकी डिसीजन है आप उसको फॉलो करते हैं, चला तो सब खुश रहेंगे, रहा तो एवरीबॉडी हैव एन ओपिनियन कि आप ऐसा कर सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे. तो आई थिंक वो बात तो है. सही में बनाना था सेपरेट टीम्स. आप संजू सैमसन को T20 में रखना था. ही इज अ प्रॉपर T20 प्लेयर. व्हाई इजंट ही प्लेइंग? व्हाई यू ओनली स्विचिंग हिम व्हेनेवर दिस वर्ल्ड कप? यू गिविंग हिम द अदर फॉर्मेट. व्हाई aren't you giving other players like proper chances? Back them, even if it's a world cup, back them in your team. I think that's where you'll be questioned. But yeah, right now it's three different formats. I think is the ideal thing. ऐसे tour पे if you want to prepare for certain formats, I think T20 this is a good team. One day it's decent, and Test ka, I'm sure they'll put a strong outfit there. And if you want them to be fully fit, so it's better that they don't play all three formats right now. West Indies can rebuild ODI team. Athanaze, Hope, King, Shepherd. They have to bring back Puran. Yeah, they have to bring back Puran, but I think उन्हें भी छोड़ के चलेगा because of the board and their shenanigans जो भी था, मसले जो भी थे वहाँ पे, obviously ना सुन रहे नहीं किसी की. And again ब्रावो का भी भाई retirement ले लिया, so it's still not thing. But Athanaze इनला अच्छे players है. Even in the test he was trying to get off to good starts लेकिन हो नहीं रहा था. He couldn't finish it off. But yeah, again like you know something very funny, सुनील नारायण उन्हें 2 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उसको लिया ही नहीं because board में problem है. Ashwin to is getting in every World Cup. If Narayan played the last 2 T20 World Cups, they would have made the semi-finals, finals, in my opinion. Along with like maybe Pollard or something like that. Like 2-3 player अगर खेले जो आप बिठा के रखे because of contractual issues, उन लोग अच्छा compete करते हैं West Indies. They're crazy. If you pick the right players there, or like their best players, if you pick their best team, they will do well. But you don't pick the best team because of contractual issues, politics, and like लड़ाइयाँ रहते हैं board में. तो उस हिसाब से आप नहीं करते. अगर भाई आप प्रॉपर टीम खेली तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है होम कंडीशंस में उन लोग पहुंच सकते हैं सेमीफाइनल, क्यों नहीं पहुंच सकते? I think subcontinent teams to learn from SENA countries how to play knockouts. Yeah, I think the thing is also subcontinent countries take too much pressure compared to SENA countries. उन लोग they take it more as a job, like they're at work, they're going to give the 100%, they will find the way to win. अगर हार गए तो वो हार गए. Subcontinent it's more than just a game. It's just more than just a game. You lose, you don't, like यहाँ पे एक हफ्ता 2 हफ्ते whoever I met they said कि भाई दिल टूट गया and stuff like that. Australians, like they won the World Cup, they celebrated that night, उसके बाद chilling next day, like they're playing FIFA, ये वो, they're playing other games. Even fans, I'm not just talking about players. तो like एयरपोर्ट पे भी नहीं आए भाई कप लेने. it's more अपने पास तो पूरे यहाँ पाकिस्तान टीम आई तो पूरे लोग एयरपोर्ट पे चले गए. तो अब तो इंडिया के वर्ल्ड कप जीती तो वो परेड कैसा रहता था. जॉस बटलर वाज द ओनली वन ऑन दैट कौन सा साबरमती रिवर फ्रंट में एक ब्रिज है, वहां पे जाके उन्होंने वर्ल्ड कप पकड़ के फोटो लिया. अगर रोहित शर्मा रहता था भाई अलग मसला रहता था वहां पे. वही है राइट. अगर आप इंडियन फैन, अगर आप जीत रहे then India is the best fan base. If you lose then they're the worst fan base. Same thing with Pakistan. उन लोग like बहुत emotional हो जाते हैं. यहाँ पे क्या है, if they win they're not that fun. Australia, England and stuff like that, they'll enjoy. I think England more in football, but in cricket if they lose, it's the best it's the best fans to have, or the best players, because they don't take it too hard that much. But if they win, it's not as much as fun if India win or Pakistan win, because उन लोग crazy celebrate करते, पटाखे फोड़ते. And यहाँ पे तो I saw so many people bought fireworks and everything, but waste हो गए. Like that's what it is. यहाँ पे mindset थोड़ा अलग है. And pressure, it's difficult also as a player. अगर आप Indian player है, it's difficult to handle that pressure compared to if you're a player maybe in a Saudi country. Maybe that's an excuse, but that's what yeah, I mean, again, like you can say SENA countries also in knockouts. If you talk about South Africa, they don't have the best mindset. England have only won 1 World Cup since a long time. So I mean, three if you count a T20, yeah. Like, but like my thing is like maybe it's just like on that day kind of a thing. But yes, probably particularly Australia and like even New Zealand, you see they always come and lose in the semi, but they consistently in the semi-final. I don't think they're as strong as India. I don't think they're as strong like as India, Australia and stuff. Magar they compete with them. And New Zealand still have won more than India in the last 10 years. They won a WTC championship.
लाइक तो वो टीम के साथ आप एक ज्यादा जीत रहे इंडिया, एंड इंग्लैंड 3 जीत गया, ऑस्ट्रेलिया 3-4 जीत गया, पाकिस्तान भी जीती चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, श्रीलंका हैव वन एशिया कप आई थिंक, T20 वर्ल्ड कप इन 2014, तो मेनी टीम्स हैव वन मोर। या ठीक है, लाइक बट लाइक T20 में भी इंडिया श्रीलंका वन लाइक जस्ट मोर रिसेंट देन इंडिया, तो मेरे हिसाब से आपका कुछ है प्रॉब्लम सेमीफाइनल फाइनल में, एंड आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा जो भी है प्रॉब्लम. Josh Butler's captaincy is looking very ordinary in the ODIs. West Indies versus England. The first one, West Indies played very well to make it through. But yeah, Josh Butler looks like he's losing his grip. No, I think if you go back when he started, वहाँ पे भी उन्हें he lost like 3 T20s against South Africa. He lost a few games when he was made captain. उसके बाद उन्हें he also lost to Ireland in the T20 World Cup, but उन्हें पलटाया वो and they won the T20 World Cup. So I was expecting the same thing in the World Cup, but he didn't do that. So I don't know how to rate him. I think he's been punching way below his weight. Maybe captaincy is not his thing. Maybe he's taking too much pressure. And Owen Morgan is a difficult guy to follow, because Owen Morgan set everything up, and the way he captained, it's very difficult to follow that. So maybe he's not on that level, but Josh Butler also handling players, communicating, maybe it's not thing. You got to try something else, because in test matches they've kind of sorted it out. Magar T20s, one days, maybe they have to try another captain and let Butler do, because Butler's batting has been very poor as well. Can you speak in Hyderabad accent? हमने अगर हैदराबाद में बात करें, आप लोग समझना कितना आएगा वो है असल. कार्तिक भाई, आपका कार्तिक भाई कहाँ से की? बोले थे स्टील फैक्ट्री, वो जो स्टील फैक्ट्री कौन सा स्वास्तिक स्वास्तिक स्टील फैक्ट्री. स्वास्तिक ने ही टोल्ड मी. एनिमल, अरे एनिमल देख लिया नहीं देख लिया तुम लोग? गुस्से में आ जाएंगे अगर बोले तो वो मेरे को 3 वक्त बोले कहाँ से हो, बट ही इज फ्रॉम स्टील सिटी, साउथ सिटी, स्टील सिटी. क्या है वो, सिंधा कहाँ का यार? स्टील सिटी भिलाई. ओके, I don't know where that is. Man of Steel है कार्तिक भाई, सुपरमैन. प्रॉमिस करे आएंगे बोल के, मगर वो क्या मेरे को अभी तक याद नहीं आ रहा उसी. गए तक भूल जा रहे अपन. भिलाई स्ट्रीट सिटी इज अ स्टील सिटी. हाँ, वहां से है. करेंगे हैदराबाद में, बिल्कुल करेंगे. एंड मैं ये जो सीरीज अभी आ रहा like again Mustafa, like what format are you looking at most? Test. हाँ, टेस्ट फॉर्मेट. और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान भी मैं टेस्ट, आई थिंक वहाँ पे तो खाली टेस्ट है. 3 बॉक्सिंग डे तो मेरा फेवरेट रहता है वहाँ पे, लाइक हाँ, आप रात में वो जाग के वो देखो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका दोपहर में. तो मेरे हिसाब से आई थिंक मैं टेस्ट सीरीज बहुत एक्साइटेड हूँ देखते. मगर ओवरऑल मेरे को याद है लास्ट मैं काफी टूर्स देखा इंडिया साउथ अफ्रीका का, बट द लास्ट वन आई एंजॉयड. आई थिंक वो मेरे को पसंद आया था 2006-7, बिकॉज वो वनडे में भी आई थिंक जहीर खान हर वक्त उन्हें ग्राम स्मिथ को बनी बना दिया था. ही वाज ऑलवेज गेटिंग हिम आउट आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्लिप पे कैच, कॉट बिहाइंड, वो वाला. और वही सीरीज में श्रीशांत मारा था टेस्ट में. तो वो मेरे को बहुत पसंद आया. आई यूज्ड टू लिव इन आंध्रा, आई नो लिटिल तेलुगु, आई नो जीरो. वेयर इन आंध्रा? किधर रहते थे आप? एंड नॉट इंटरेस्टेड इन वाचिंग एनिमल. आई डोंट अप्रिशिएट टॉक्सिक मूवी. नको देखो भाई एनिमल. भाई मुस्तफा भाई मैं कल देखने गए थे भाई, 3.5 घंटे टॉर्चर था. मुस्तफा भाई आपका रिव्यू दो कि आपको एनिमल कैसा दिखा. वो भाई पापा मेरी जान एक गाना है, वो मेरे ख्वाब में आ गया. नहीं, मेरे को लाइक मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, मगर मैं जो एक्सपेक्टेशंस थे बिल्कुल भी मैच नहीं हुए. वो तो बहुत उम्मीदों से गए थे बेचारे. नहीं, हम लोग सब गए, मैं भी गया, आप भी गए, आप भी बहुत पंप्ड थे, मैं भी बहुत पंप्ड था. वी वर लाइक इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. मेरे को तो अच्छी नहीं दिखी भैया मूवी थी श्री कुल्लम. अच्छा, आई एम नॉट प्रीटी श्योर किधर है वो, बट मे बी आंध्रा का साइड वाले. तो जबरदस्त खाना तो मिलाऊंगा आपको, स्पाइसी. मिचेल जॉनसन का नया बयान भी आ गया. अरे आदमी उठे बैठे बयान पॉडकास्ट पे उन्होंने भरत सुंदरेशन के साथ बोले थे कि भाई डेविड वार्नर को, जब मैं एक बार बोला था कि ही कमेंटेड, आई थिंक him and his wife was defending him on Twitter or something like that about his performance या वैसा कुछ. He said something on air और कहीं लिखा था उन्हें, तो डेविड वार्नर personally messaged Mitchell Johnson, said stuff which what Mitchell Johnson को नहीं पसंद आया वो, तो that maybe added to his comments. तो थोड़ा सा पर्सनल इशू भी है यहाँ एंगल. मगर उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोले, उन्होंने बोला मैं नहीं बोल सकता हूँ वो, मगर उन्होंने कुछ बोले टेक्स्ट में, तो मेरे को और गुस्सा चढ़ गया, इसलिए मैं वो फोड़ने गया. बाहर भी ऐसे मसले होते हैं. हाँ, बाहर भी ऐसे मसले होते हैं. नहीं, आई थिंक बाहर ज्यादा मसले होते हैं, बिकॉज नहीं, बाहर क्या है, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. यहाँ पे आपको कोई आके बोलेगा भाई रोहित शर्मा गलती क्या बुरा शॉट खेला, पिंडे में मिला दिया, उसको कैकू बना रहे कैप्टन. नो वन विल से इट.
Will ex-cricketer say it? एक्स क्रिकेटर तो नहीं, अपने खुद के पब्लिक बोलती है, अपने वाले अपने नहीं, मिचेल जॉनसन बोल रहा, उन्हें डेविड वार्नर के साथ खेला है, जॉर्ज बेली के साथ भी खेल चुका है, एंड उन्हें हाँ नो बेली दोनों, एंड जॉर्ज बेली चीफ सेलेक्टर शायद या जो भी है, उन्होंने लाइक ही इज इन चार्ज, तो उन्हें और ये दोनों के साथ खेला, फिर भी उन्हें धज्जियां उड़ाते दोनों का, तो ये नहीं होता यहाँ पे मेरे हिसाब नहीं नहीं, इतना एक्स क्रिकेटर ना नहीं बोलते कि नहीं नहीं होता, but वो भी एक्स क्रिकेटरों का फ्यूड कब हुआ है लास्ट में, को तो याद भी नहीं आ रहा कब हुआ था लास्ट, किसकी लड़ाई हुई थी, गंगुली की एक हो रही थी लड़ाई बीच में विराट कोहली से, वो हाँ पब्लिक में आके कोई नहीं बोले, हाँ इन्हें हाँ वो कोई एक्सेप्टेंस आइदर प्लेयर में से नहीं आया, तो यार वो तो आपके हिसाब से उन्हें सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? कौन मिचेल जॉनसन ना, वो मिचेल जॉनसन का मैसेज मैंने पढ़ा, बट अगर उसको उतना बुरा लगा तो आई एम प्रीटी श्योर जो उसका बयान था पहले वाला कि भाई डेविड वार्नर को कई को नहीं 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 नहीं, डेविड वार्नर बहुत जबरदस्त प्लेयर है, एंड आई थिंक उन्हें जिस तरीके से देखो, इट्स नॉट लाइक उन्हें चूज कर रहा है कुछ के मैं किधर कब खत्म करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, उन्हें कैसे करेंगे यार, लाइक उन्हें देखो 200 मारो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, आप उसको रखेंगे ऑब्वियसली टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में, हाँ ओडीआई स्कीम ऑफ थिंग्स में थोड़ा डॉजी था, बट एशेज में भी डिसेंट स्टार्ट दे रहा था, हाँ चलो ब्रॉड का जो भी बोलते हैं आप, लगातार उसका अगर एवरेज है वो उतर गया, लाइक इट्स बहुत कम हो गया, कम में आप बोले स्लो हो गया, बट मेरे बोल रहा हूं मैं, अपार्ट फ्रॉम वो डबल 100 उन्हें इंडिया में भी फेल करा था, बट अगेन उसके हाथ में सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन जैसा आप बोले जॉर्ज बेली है या जो भी उनके कोच है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बोल रहा कि भाई उसको कैकू दे रहे मौका पे, उन्हें बोल रहा आई एम गोइंग टू रिटायर इन आफ्टर द पाकिस्तान सीरीज, कैकू खिलाना आपको पाकिस्तान सीरीज जब उन्हें फॉर्म में नहीं है, आप और किक ओपनर को चांस दो, प्रॉपर ओपनर, ठीक है, अगेन मेरा वही कॉन्ट्रडिक्शन है कि भाई वो वार्नर के हाथ में थोड़ी है, वार्नर तो अपना नाम डाल दिया हैट में, आप सिलेक्शन आपके हाथ में, उन्हें सिलेक्शन को ही बोल रहा ही सेइंग कि भाई आप उसको कहीं को दे रहे मौका, आप व्हाई डोंट यू मेक अ कॉल एंड से कि भाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग टेस्ट, गिव इट्स अ फ्रेश सीरीज, फ्रेश सीजन, गिव समबडी अ चांस, अगर थ्रू द स्टैट्स एंड थ्रू द एनालिसिस अगर उनको वैसा लग रहा देन वो फीलिंग सही है भाई, वो उनका ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन में मैं बोलूंगा कि अगर एज अ कुछ भी बोलो लाइक सर्वेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मे बी उसको वो थोड़ा लेवरेज मिल रहा होगा, एंड आई डोंट माइंड दैट बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के लाइक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अच्छा खेला, ही हैड अ डिसेंट एशेज एज वेल, नॉट वेरी पोर आई वुड से, डेविड वार्नर प्लेयर जो है, तो मेरे हिसाब से आई डोंट माइंड डेविड वार्नर प्लेइंग, पर्सनली बोल रहा हूं मैं, नॉट दैट सब्जेक्ट टू व्हाटएवर, मेरे हिसाब से एक सीरीज है दे दो बोल के, लाइक उन्होंने बैंक्रॉफ्ट को बोला, बैंक्रॉफ्ट तो मेरे को कब से की नहीं दिखा कौन है, उन्हें मेरे को एक चीज समझ में आया, उन्हें बोला कि डेविड वार्नर सैंड पेपर में था, ये वो उसको कैसा खिला रहे, उसमें बैंक्रॉफ्ट तो मेन था, वो नहीं था, एंड स्मिथ भी था, प्रॉब्लम मेरे को ऐसा दिख रहा है डेविड वार्नर के साथ जो हुआ था, एवरीवन इज सेइंग कि उन्हें मास्टरमाइंड था इन द सैंड पेपर थिंग, सो देयर थिंग, मगर उसको भाई अब इतना सजा दे दी है उसको, अभी तक उन्हें कप्तानी नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया का, मेरे स्मिथ वाइस कैप्टन या, और मेरे हिसाब से पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ जो भी है, they're all benefiting from Maxwell and Warner who are leading the side without people noticing. उन लोग ही tactics बना रहे मेरे हिसाब से, because David Warner is a proper tactician, Maxwell is a really good tactician as well. मैं जो देख चुका हूँ, observe कर चुका हूँ, Steve Smith and Pat Cummins have benefited from these players. तो मेरे हिसाब से you've done the thing, बार बार आप लेके आ रहे, सैंड पेपर कर दिया, वो कर दिया, दे कैंसिल कल्चर खत्म करना, आप सजा करें, सजा क्या है, सजा ये है 3 महीने खत्म, उसके बाद डोंट, ओके फाइन, यू वांट टू डिस्कस इट, बट डोंट कीप पनिशिंग हिम फॉर समथिंग व्हेन ही इज ऑलरेडी डन द पनिशमेंट, आप पनिश कर, आप उसको कप्तानी नहीं दे रहे जब वो हो गया, आप उसको खेलने नहीं दे रहे बिकॉज थिंग ही वाज सैंड पेपर, 1 साल का बैन लगा, मैं आपको एक चीज बोलूं, 1 साल का बैन बहुत ज्यादा दे दिया वो, आप चीट बोल रहे, वो बोल रहे, बट दिस इज हैपेंड बिफोर, बॉल टैम्परिंग, it's happened with lollipops, it's happened with the mouth, it's happened with thing, even Sachin Tendulkar was accused, lot of people have been accused of ball tampering, so I think 1 साल बहुत ज्यादा दे दिया, वो भी कैसा हुआ था, नहीं वो तो आई थिंक हाँ अफरीदी का था वो जो बाइटिंग वाला ना, या पीटरसन देख के बोला था, भी वो साउथ अफ्रीका में जो स्टोर था वहां पे, भाई अब ये चीजें होती, चलो प्रूवन गिल्टी हो गए, प्रूवन हो गए, बैन हो गए, कैप्टनसी निकल गई, और क्या ही करेंगे, और उसके बावजूद भी आके उन्हें अगर 200 और अच्छा खासा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा, ठीक है भाई, आई मीन हाउ वुड बी द कंडीशन इन सेंचुरियन वेयर इंडिया इज प्लेइंग देयर फर्स्ट टेस्ट, I cannot tell you right now, but in my opinion, in my opinion, it'll be a spicy pitch. There'll be a bounce. It might get variable as the game progresses. You'll see some up and down, in the pitch. It won't be that coming onto the bat too well. Maybe in the second, third day, third, fourth day, but spicy. I think spicy pitch. It'll be there'll be grass on it. It'll be lively, and you'll have value for your shots too. But this is, I'm just saying from past tours. I don't know exactly how the pitch is. Will India play 4 seamers in the first test? Again, I think it'll be pitch के ऊपर. Yeah, I think अगर if you just ask me right now, I think they'll play 4 seamers and a spinner.
Probably the same. I go with the same thing. What are your thoughts on South Africa selecting two left-arm pacers for the Test series? I think it'll be a challenge for India. Yeah, that means they're going to target that rib cage, some short balls as well. Especially Janssen can exploit it. There will be spells which will be very challenging, particularly for the middle order. जब आपको even if you got off for a good start, they can completely change the length and everything and set a field where make it a bit uncomfortable. And sometimes ये pitches क्या रहते हैं मालूम, it's not always flat हो जाता है. Sometimes the best time to bat is in the beginning, as compared to England where it swings a lot, or in other places it swings a lot and everything. Here sometimes it becomes difficult to bat after you settled in, you know what I mean. Like in England as well, it's like that. Ball आप पहले 10 ओवर में मार लो, फिर उसके बाद बॉल स्विंग होता. South Africa में maybe the bounce and everything will increase as the match progresses. innings कभी stable और steady नहीं हो सकते आप. Maybe आपको थोड़ा condition समझ में आ सकते हैं, but again always वो out ball आपको लेके चले आ सकता है घर को. हाँ एग्जैक्टली, एंड दैट्स द थिंग. अगर आप डिफेंसिव खेल रहे, वहां पे एक ही प्रॉब्लम है, जैसे लाइक समवन लाइक पुजारा हैज नॉट बीन टू सक्सेसफुल एज कंपेयर्ड टू ऑस्ट्रेलिया. अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखें, द मोर टाइम यू स्पेंड एट द क्रीज, द मोर वैल्यूएबल इट इज, और आपके लिए बैटिंग इजी हो जाता है. मगर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में क्या रहता, बिकॉज ऑफ द स्विंग, बिकॉज ऑफ द पिचेस, इट बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल. वन बॉल हैज योर नेम ऑन इट एंड दैट्स इट. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्लेस योर शॉट्स टू एज अ बैटर. बिल्कुल. I mean, it's going to be fun. रोहित शर्मा कैसा डील करेंगे with left armers? Again, it'll be fun to see. And again, India के scheme of things में अगर आप देखो, left armers ज्यादा है नहीं, that they play in nets as well, so it'll be a good challenge for them as well. But yeah, again, Marco Jansen will again have the height advantage. Bounce तो कर करके मुंह फोड़ देंगे, तो it'll be fun to see him. बबूमा के ऊपर मुस्तफा बोलिए, कप्तान साहब कुछ करने वाले हैं. मतलब I like his technique. Technically बहुत अच्छा दिखता है मेरे को जब बैटिंग शुरू भी करता है. He's not got a major start, बट जब मारना शुरू करता है, he had a good square cut, अच्छे ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलता है particularly. तो बबूमा के ऊपर you have any उम्मीद कि भाई उन्हें कुछ करेगा? Yeah, I think last time around उन्हें जिताया था थर्ड टेस्ट मेरे हिसाब से. चेस में उन्हें था, I think, along with Peterson. Yeah, he batted really well. If you noticed, when they were chasing 240, 250, they were in a bit of a pickle. They lost early wickets. में उन्हें ठहर गया था. Elgar भी took a lot of body blows. So I think Bavuma, Elgar, these guys really grinded out, and in these conditions they know how to play. And then you have players like I think Kyle Verren, the wicket keeper. Then you have Peterson, who will play shots, and I think Markram in look they'll play the shots. But then you need gritty players also. Ye conditions mein, and Bavuma will give you that. So will Elgar. And I think more than Elgar, Bavuma will also play shots. He'll take a few risks, and there kaptani bhi acha karta mere hisab se. With this South African team reaching the semi-finals, the way the cricket they played, I really enjoyed it. ठीक है, result नहीं आया, मगर जो cricket खेले उसके कप्तानी के अंडर मेरे को तो मजा आया. I'm also going to be interested to see Kyle, the wicketkeeper Benini, जबरदस्त against Australia भी बहुत अच्छी performance दे रहा था. He was the only one was standing up. उन्हें खाली अकेला मार जब तक एंड तक उन्हें खड़ा हुआ था. ही वाज ओनली वन जो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत चैलेंजिंग दे रहा था, जो समझ रहा था कि भाई रुक के खेलने की है, ऑड बॉल मारने की है. तो आई थिंक दिस गाय इज वेरी गुड बैट्समैन. मजा तो आने वाला है उनको देखने. एंड देन अगेंस्ट स्पिनर इन केशव महाराज, ये वो लोग अच्छा टेस्ट रहने वाले हैं. कार्तिक भाई क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उन्होंने एनिमल के पीछे पड़े हुए बेचारे, अभी तक उन्होंने नहीं देखना चाह रहे बेचारे एनिमल. बहुत अफसोस. अगर आप ऐसे टाइम पास को देखना चाह रहे हो तो देख लो भाई, गाने वाने ठीक ही से. In South Africa, there would be seam and a tennis ball bounce also, but we might see some turn in Cape Town. Yeah, we might see some turn in Cape Town, but generally, again, it's traditionally like bouncy wickets, height advantages ले लेते South Africans, pace advantages ले लेते. So I think they're gonna go and use those advantages against Indian team जो इतना भी pacey attack नहीं है. They won't let it turn from day one. There's no chance. The ball. Yeah, maybe on the last day, second last day, they're not going to let it turn in the first 3-4 days. Yeah, India should play more A-tour games. Yeah, बिल्कुल ये बात मुस्तफा भाई कब से की बोल रहे कि भाई, and राहुल द्रविड़ भी I think बोले थे कि भाई, when was it? This was like I think before the border gavaskar or after the border gavaskar, जब उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला था, तो उन्होंने सीधा किराक होके बोल देते कि भाई देखो, हम लोग आइडियली जब हम लोग बैक इन द डेज खेलते थे तो हम लोग 1 महीना पहले जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, कंडीशन फिट टेस्ट खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे. मेरे को आइडियली बेस्ट स्क्वाड नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली. आई थिंक अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा. अगर ये वाले वैगन में मिला दिया, पिंडे में मिला दिया, तो कुछ भी नहीं बोल सकते उनना. They're getting chance to play that President 11 whatever, and then they're gonna have a lot of games, and then obviously the test match as well. So ये अच्छा रहने वाला है टेस्ट के भाई. द्रविड़ के अब क्या एक्सक्यूज लेके आएंगे ये टाइम अराउंड. Ibrahim Centurion will have a steep bounce, and it's currently very hot here in Johannesburg and Pretoria, so pitch will be very hard and cracks might open Very up. dangerous. It'll be dangerous pitch. I remember the Johannesburg Test match in 2018. I think India won that, but oh my God, there were body blows. Both Rahane took, even
I think Elgar and these guys took, yeah, like India won that last match as a consolation, लेकिन बहुत खतरनाक था. तो the cracks मतलब is going to up and down. Yeah, it'll hit you on the knuckles, it'll hit you on the chest, it'll hit you on the pads. There's going to be, it'll be thing, but you can still score runs. That's what it is. They have dropped Rasi from Test in T20. Only Sri Lanka from Asia managed to win Test series in South Africa. That too with young team, and I think it was KGP who smashed that 170, 180. That was the one of the best test things I've seen, because Wesi up and down tha, and they were chasing 300 plus, right? 300 plus, and he smashed in that game. It was crazy. And that was the period where South Africa were beating Pakistan, India. They also beat Australia. They were killing everybody. Maybe they might have lost Australia, but they were beating everyone. No, they beat Australia as well. That was the sandpaper time. And it was Kusal Pereira who, in the chase, smashed it. I think that's the series you're talking about. This time, luckily, we are not playing in Johannesburg. I think there's a 30-20 in the first ODI in Johannesburg, But test mein nahi hai. Bavuma, Elgar, and Varane are the only batsmen in squad from the Australia series. Rest are all dropped. Interesting. And again वही है कि भाई I think they understood कि भाई जो last time की squad थी around they needed to make it because भाई 80 60 और रबाडा नॉर्थ के जिस तरीके से डाल रहे थे बेचारे दे वर बॉलिंग देयर हार्ट आउट एंड उसके हिसाब से फिर बैट्समैन जवाब नहीं दे रहे थे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को द बॉलर्स वर नॉट द बॉलर वर स्टैंडिंग अप टू द बैट्समैन देन द बैट्समैन वर गेटिंग स्केयर्ड डीन एल्गर इन पर्टिकुलर आई विल बी कीन टू सी कि उन्होंने क्या लेके आते बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में उसके पीछे काफी थे बट उन्होंने परफॉर्म नहीं करे वहां पे भी so he gives a lot of character in these pitches and उसको उन्हें बॉडी डालता लाइन में he doesn't care if he gets hit and everything and he's very difficult to get out at times but again he's getting older also his reflexes will be tested लेकिन मैं जो देखा is a very gutsy player. He can be frustrating in these conditions because at times he'll struggle but he won't give his wicket and दूसरे end से कोई मार रहा तो उन्हें वैसा type of player frustrating हो सकता for opposition. What about Mr. Keegan Peterson? We know that he's been very good against India in particular. So any thoughts about him? Yeah, I think the last time he played, he absolutely killed it. He was the player of the series for me. He was the reason India didn't win the series. One of the biggest reasons. So I'll be excited to see how he plays. Markram and these Markram is playing, right? He's in the test team. Yeah, so I'm let's see how Markram plays. He's killing it in one days and T20s, but I rate him highly. I think since he won the Under-19 World Cup, for me, he's always been a player that I've really enjoyed to watch. Like, and Abhi, what is he, 29, 28, 30? So he's at his prime. So let's see. It'll be interesting to see how he plays, and I'll enjoy his batting, I'm sure. I want to see how Jaiswal, Gill, Iyer, Surya tackles. Yeah, it'll be fun to see how these guys tackle. And यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे I think आप ये नहीं बोल सकते कि बच्चों का flaws expose होंगे. I think they're just going to be introduced to a new level of cricket, a new level of conditions and pitches which they're not accustomed to. मतलब उनको आदत नहीं है यहाँ पे खेलने की तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई नहीं आता इन लोगों को यहाँ पे खेलने को. It's just the first time around. Yeah, and they're going to play against also a high quality team who are used to their conditions. जब आप पहली बार जा रहे हैं फॉरेन कंडीशन में मुश्किल रहता है जब दूसरे टीम्स आते हैं इंडिया को उन लोगों को भी मुश्किल होता है प्लेइंग दैट टर्न दैट बाउंस द टॉप स्पिन ऑल दैट उन लोगों को भी मुश्किल रहता है तो दिल बी चैलेंजिंग बट लाइक वी सीन बिगिनर्स डू वेल इन सब कॉन्टिनेंट you'll see beginners do well here as well. It's about how you prepare mentally, how you prepare also with the bat ball. आप क्या preparations है आपके क्या drills कर रहे हैं कैसा आप acclimatize कर रहे हैं या condition specific कैसा आप वो कर रहे हैं. And sometimes it's also good not to think too much. Yes, you practice hard, you have plans, लेकिन उतना आप सोचे तो फिर वो रहता है. And you should be in a good space where you're confident rather than being under pressure. Yeah, that innings from Kushal Pereira, South Africa bowler struggle against left-handers. India should play यशस्वी एंड ईशान या बिल्कुल ये लेफ्ट हैंडर्स का तो इंट्रोड्यूस करना जरूरी है बिकॉज अगेन बॉल विल बी कमिंग इन अगेन फ्रॉम द लेफ्ट आर्म बैट्समैन एज बॉलर्स एज वेल जो साउथ अफ्रीका के पास है टेस्ट में particularly so it'll be fun to see left handers come and try. I mean the left hander has to be that quality also like Rishabh Pant. He's a left hander but it's not because he's a left hander that he's playing well. It's because he is high quality. Like if it was like that you should play every team should have more left handers in their team but I think it makes the combination of right and left will always cause problems for bowlers. They will struggle. So if you have lefties, it always helps. But that guy should be quality also. Like a Rishabh Pant, I will play him any day, any match, any series. He's my guy. Like go to. I think even Ishan Kishan has that potential, but not yet. But yes, you should develop him. Bhai Ishan Kishan, आप देखो उसको उन्हें 200 मारा.
फिर एशिया कप में अंडर प्रेशर 4 विकेट चले गए, हार्दिक पांड्या का 270, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था वो पिच पे। बारिश हो गई, हमको नहीं मालूम क्या होने वाला है। उन्हें इतने अच्छे वो कर रहा, मगर आप उसको बिल्ड नहीं कर रहे, आप उसको डेवलप नहीं कर रहे। 2 साल से छोड़े पकड़ रहे। सो गिव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भाई आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, लाइक फॉर लाइक ईशान किशन है, गिव हिम दैट एंड मोल्ड हिम इनटू इट। इफ ही फेल्स देन यू कैन मूव ऑन फ्रॉम हिम, बट गिव हिम अ फुल फ्लेज चांस। बिल्कुल, ईशान किशन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है यार, लाइक उसको मैं नेट्स में भी देखा ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, फिनोमिनल बैट्समैन भी बहुत अच्छा है यार, लाइक ही हैज द बिग शॉट्स इन हिम, उन्हें बाहर आके भी मार सकता। अगेन यस, थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। वो प्रैक्टिस में सब खेलेंगे, सब मारेंगे, मगर आप देखो ना फील्ड पे क्या करा। फील्ड पे 200 है, लाइक आप देखो, यू नो, इवन लाइक इन द नेट्स जडेजा, सूर्या कुमार, दिस गाइस आर ऑलवेज इन द नेट्स, बट इट्स अबाउट प्रोड्यूसिंग ऑन थिंग, एंड ही इज प्रोड्यूस्ड। दैट्स माय प्रॉब्लम, ही इज प्रोड्यूस्ड। या तो आई थिंक उस हिसाब से अगर आप इतना कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, या जब भी मौका मिल रहा है अच्छा खेल रहे, तब वो बंदे को डेवलप करो, आप उसको दो रेगुलर चांस, राइट। आप वर्ल्ड कप पे खिला सकते थे, अगर आपको लेफ्ट हैंडर होना था मिडिल ऑर्डर में, उसको खिला सकते थे, बिकॉज उन्हें खेल चुका है लेफ्ट मिडिल ऑर्डर में, हर जगह खेल चुका है yeah. एग्जैक्टली। तो आप डेवलप करो उसको, राइट, प्रॉपर डेवलप करो, एंड आई थिंक ईशान किशन फैंटास्टिक एसेट। अगर कीपर भी नहीं बनाना है आपको, फील्डर बहुत बेहतरीन है, सेफेस्ट पेयर ऑफ इंडियन हैंड्स दैट आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। द शेड्यूल ऑफ पाकिस्तान बिटवीन वार्म अप एंड फर्स्ट टेस्ट माइट मीन पाकिस्तान स्टार्ट ऑफ विद a loss, as they are in Canberra, which is 3 behind Perth. Canberra to Perth flight is 6 hours. I think उन्हें थक जाएंगे बोल रहा है। I think is that what he's saying, or else he's just saying time difference or something like that. इब्राहिम भाई बुच्चिला लिख दिए कुछ में। मतलब schedule of Pakistan between warm up and first test might mean Pakistan start off with a loss, as they are in Canberra, which is 3 hours behind Perth. Canberra to Perth flight is 6 hours. So because of the jet lag maybe, and the time difference and the flight and the fatigue, they might lose the game, first test match. Should Rohit and Virat play ODIs to get used to conditions? Say last time our coach told we couldn't. I think they should play the India A match if they want to prepare more than anything, because it's a different ball. You have to play against the red ball, and that will be the ideal preparation rather than playing the white ball, in my opinion. What are your thoughts on Brendan McCullum saying England will be using baseball on full throttle on the India tour? Do you think BCCI would go with rank runners if they got, even 2021 they got massive cricket? No man, I think जो आपका advantage रहता है, like आप बांग्लादेश को भी वही चीज बोल सकते हैं, या आप साउथ अफ्रीका को, everyone will use that advantage to their thing. चलो आप इतना भी नको कर दो कि आप भी नहीं खेल पा रहे वैसे रैंक प्रॉब्लम वही मैं एक चीज देखा, राइट, मेरे को आई एंजॉय रैंक रनर्स, ठीक है, तो मैं कंप्लेन नहीं, बट अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, गलत है। मैं आपको बोलता हूँ क्यों, बिकॉज दैट नेचर ऑफ द पिच विल नॉट इम्प्रूव, इट विल जस्ट इल गेट, या सो द एक्चुअल गेम वोंट बी थिंग। if you see, ideal pitch is what, like, you know, I'm not saying it has to be a flat deck or anything like that, but it should be scoring and thing. You'll see now in South Africa, you will have times where in a session you're 100 for 1, and another session you're 50 for 4. That means there is something in it for the bowlers and the batters. But if you made it a rank turner and the pitch is not going to get any better, then you only spinners are think, then it's not a proper test wicket, right? I enjoy it. I find it different, but I don't think it's correct. Like you should not be having those. सब्जेक्ट तो इतना बनाओ कि आपने खुद के बैट्समैन भी खेल लेना वो रैंक रनरों पे, ऐसा लगेगा। स्टीव स्मिथ जब कैप्टन हुआ थर्ड टेस्ट में बॉर्डर गवास्कर में, बैकफायर हो गया वो, और अपन ला तो है। आप ऐसा अगर वो बनाएंगे विकेट्स, एक दिन आपको लग जाएंगे। 2011 में भी आप ऐसा थोड़ा बहुत करे, वहां पे पीटरसन फोड़ दिया आपके स्पिनर्स को, एंड देन मॉन्टी पनेसन एंड ग्राहम स्वॉन बोल्ड बेटर देन योर स्पिनर्स। सो ऑफ कोर्स आप फंसेंगे, वैसा है, बट द प्रॉब्लम इज if they make it a traditional Indian cricket, they have more chances of losing also. So like इसलिए उन लोग नहीं करते वैसा। As selectors have said, Bavuma, Elgar, Jansen, Coetzee, Ngidi will be sent to play 4-day domestic match. बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन कर साउथ अफ्रीका। हैदराबाद वाजिंग ने फर्स्ट मैच बताया को भेजो प्रिपेयर करने, बेसबॉल के बजा के रख देंगे, आप पिच जाके प्रिपेयर करना तो भाई रैंक टर्नर ही डालेंगे उन लोग, बिकॉज अगर आप वो, बिकॉज अगर आपको याद है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज था कोविड में, उसमें पहला टेस्ट मैच में प्रॉपर विकेट थी, जो रूट डबल 100 मारा और आप हार गए थे वो मैच। उसके बाद जो रैंक टर्नर शुरू हुआ अहमदाबाद में, ओ माय गॉड, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। भाई एक गेम में मैं और मेरे दोस्त देख रहे थे, वी आर वाचिंग इट, आई वाज इन जिद्दा एट दैट टाइम। He came, he said, I'll just come for an hour, we'll chill for a bit, we'll have coffee and stuff, and then you do your stuff, right? I said, yeah, I'm gonna watch the game, it's gonna take me 5-6 hours. He came in half an hour, they lost maybe 7 wickets, 8 wickets. As in half an hour, England lost 7 or 8 wickets. रैंक टर्नर में एक ही बंदा मार सकता है आगे, हैरी ब्रूक।
आई थिंक द बेस्ट प्लेयर इन रैंक टेनिस इज रोहित शर्मा. एंड देन इंग्लैंड से अगर आप देखो, आई डोंट नो कौन खेलेगा. पीटरसन तो बहुत जबरदस्त था. अभी आई डोंट नो. जो रूट के भी लगे हुए. Joe Root is still decent, but yeah, I don't know. Maybe Joe Root is the best player of spin, but I'm not sure. In 2021, the most threatening bowler after Jack Leach was Joe Root. Exactly. Joe Root was getting five first, man. Now you tell me, if you like that guy part timer is spinning it this much, is that a proper pitch? That's not a problem. That's like very sad to see. And again, वही है कि भाई And Bangladesh have suffered because of this. They've taken the same thing. I think they've smashed it in Bangladesh. मगर क्या होता वर्ल्ड कप में कोई इधर advantage उधर नहीं, आपको वहां कुछ सीख ही थोड़ा नहीं हल्का मिलता. सा भी टर्न हुआ तो फायदा नहीं. उनको उतना टर्न होना, लाइक यू नो 1 लीटर पेप्सी होना, उसके अंडर 200 500 ml ml में 200 ml नहीं चलता काम. तो वैसा कैसा होगा भाई? यू हैव टू प्ले इन डिफरेंट कंडीशंस. Pant and Rohit, do you think Pant will be back? I mean, it's difficult based on his recovery right England, now. when England is coming here, Yeah, yeah. no, I don't. No, I don't think Maybe so. IPL IPL is what he's targeting because obviously IPL is IPL and it's a good playground to sort of domestic किच बोल सकते हैं आप, तो चल जाता. तो पंत की रिकवरी का सिचुएशन तो ये कि ही इज वॉकिंग विदाउट क्रचेस एंड स्टफ, ही इज डूइंग हिज ओन जिम एक्सरसाइजेस एंड स्टफ, बट अगेन वो जब तक आपका लिगामेंट जाके आपके नी के यू नो इट डजंट गेट क्या बोलते हैं अटैच्ड या इट डजंट गेट यूज्ड टू इट, तो जब तक वो थोड़ा मुश्किल होता है वो. भाई उन्हें तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट में था. लाइक इट वाज, या तो आई थिंक द फैक्ट दैट ही इज लाइक वॉकिंग एंड या लाइक डूइंग स्टफ, इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड आई विल बी एक्साइटेड टू वॉच हिम I'm बैक. pretty sure he himself is not in a rush to get back, and neither is the Indian. He was the only guy. Like, yeah, KL Rahul, like I'm not his biggest fan like that. I just think he's a good player, but yes, he's made mistakes. But Rishabh Pant, even if he makes a mistake, I won't admit it. I think I like him that much because he's something that in all formats, the guts that he has, and yeah, like and if you've seen in general, like there's that Gabba test, then there is that one-day match against England. I think him and Pandya, Joe counter-attacking, he takes India out of losing positions. I remember India versus England test match, one of those वो रैंक टर्नर सीरीज में bro, they were like 6 down or something. Jimmy Anderson को reverse lap मारा and he hit 90 odd in that game. That innings won India the series and got them into the WTC, the first WTC, because of the way he played against thing. And England were on the front foot with the Root and Leach and Anderson. He was reverse sweeping and everything, and it was crazy, bro. And the thing about Pant as well is like अगर WTC के final में भी ये साल रहता था on it might have made a big difference. Bro, even last no, the England test match, he was the one who hit 100, but they still lost because Bairstow लोग पागल हो गए थे. But in that year, whether it was South Africa, whether it was England, wherever they were playing, even in India, he was scoring runs. And he can take you on even from a losing position and change the whole momentum in the game. गैबा में क्या हो रहा था, आप हार रहे थे. सिडनी में भी जो आप ड्रॉ करे वो मैच, राइट, वो मैच भी आपका नहीं था. वो मैच नेथन लायन इन सिडनी 5th day, you're winning that. If you're Australia, what did he do? He took him on. He took such gambles that Nathan Lyon got worried, and it caused problems for them. So that even when they got out, when he got out, it created a mental pressure where they just couldn't find their line in length after, and then Vihari and Ashwin blocked it out. But it was Pant there as well. I think the what he does as a cricketer, I've not seen many cricketers do. Forget about Indian cricket, world cricket. Maybe a player that comes to mind, maybe Andrew Simons and Adam Gilchrist were probably my favorite counter-attacking cricketers in Test cricket. After that, it's Rishabh Pant. I mean, आके उन्हें मोमेंटम डिस्टर्ब कर देता ऑपोजिशन की, एंड देन ही गेट्स, सवाल पूछने वाले बहुत कम रहते हैं इन दो सिचुएशन. या प्रेशर में आके कोई आपको बैक आंसर कर रहा है एकदम, आप भी पीछे हट जाते हो. तो आई थिंक वही सिचुएशन था. सच है भाई. व्हाट इज दैट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वहाब रियाज टर्न? उप्पल को अच्छा रेनोवेट किया है, इट लुक्स लाइक अ न्यू पर्थ स्टेडियम. नहीं भाई, उप्पल को कब रेनोवेट करे भाई? उप्पल तो हम ना अभी यहाँ पे गए ना वर्ल्ड कप के टाइम पे. नहीं नहीं, अभी का इलेक्शंस के अंदर कुछ डाले होंगे कैंपेनिंग के लिए अजू भाई, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है ब्रो. लाइक रेनोवेट तो नहीं सुनना मैं, कुछ हो रहा था इवन व्हेन आई वाज इन द वर्ल्ड कप, कुछ ऐसा हाँ ये है कि पेंट वेंट जो हम लोग देखे थे आई थिंक ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, थोड़ा बहुत पेंटिंग कर रहे थे, लिफ्ट नया डाले, ये तो मैं खुद देखा. यस, तो थोड़ा बहुत रेनोवेट तो हुआ है. यस, बट स्टेडियम वाइज इट्स स्टिल नॉट एज गुड एज other stadiums in India. Like Mumbai is very good stadium. I like Mumbai, but again हम लोग जाके देखने ही वाले हैं. Hopefully हैदराबाद का जो टेस्ट रहने वाला है, and then IPL भी रहेगा. तो रेनोवेशन चल रहे थे during the World Cup, बट जब मैचेस शुरू हो गए थे, जब आई थिंक थोड़ा बहुत इश्यूज थे, बट यस लिफ्ट ये वो थोड़े बहुत नई चीज़ें तो ऐड करे. तो कार्तिक भाई राइट ऑन दैट. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वहाब रियाज यू टर्न इन 24 hours removing Salman but after interim PM gave PCB warning and select Asad Shafiq as Salman? Stupidity.
आप एक डिसीजन ले रहे हो, उसके बाद बोल रहे कि नहीं गलत डिसीजन था, फिर बोल रहे नहीं वो डिसीजन। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया एक्सक्यूज क्या है। उन्होंने बोला भाई किसी से प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं था एंड स्टफ, वो मेरा नाम जुड़ रहा था तो मैं रिवर्स कर दिया डिसीजन। भाई आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, आपको प्रेशर ही हुआ था, आप बोल दो क्या भाई मेरे पे प्रेशर था इसलिए मैं रिवर्स कर दिया, मेरे हिसाब से मेरे वो सही डिसीजन था। ही स्टिल सेइंग कि सही डिसीजन है, मगर देन ही इज नॉट टेलिंग मी व्हाई ही रिवर्स्ड इट, आई मीन नॉट मी, लाइक द प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर आप मशवरा लेना था दूसरे लोगों से, फिर आप अपॉइंट करना था, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड। एंड अगर आप ले लिए डिसीजन सलमान बट मेरा रहेगा, तो आप किसी का नहीं सुनना। जब आप उन्हें बोल रहा आके भाई मेरा डिसीजन है एज चीफ सिलेक्टर, ये वो हफीज का अलग है बट आई मेक माय डिसीजंस एंड ये वो। सो इफ यू मेक योर डिसीजन देन व्हाई द हेल आर यू रिवर्सिंग योर डिसीजन व्हेन यू डोंट हैव प्रेशर? पूरे प्रेशर नहीं है तो वो तो प्रेशर डेवलप हुआ कहाँ से? तो या ये इट्स तो जस्ट प्रॉब्लम है अपने पास इंडिया a पाकिस्तान problem, में। yeah, India Pakistan के अलावा like you can't stick to your own thought process, and again अगर कौन पीएम gave a warning, interim पीएम warning दिया तो इंडिया, ये वही तो बोल रहा हूँ, लाइक दीस गाइस वी सी इट मोस्टली अपने पास, कहाँ देखते हैं वो दूसरे कंट्रीज में ऐसा। लाइक आप एक डिसीजन ले कल के दिन कुछ और बोलते रहे, फिर इधर उधर यहीं पे होता है ये सब। लाइक देयर इज स्टुपिडिटी मैन। पॉलिटिक्स मिक्सिंग विद क्रिकेट आप कहीं भी और कंट्रीज में नहीं देख सकते, ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखते, साउथ अफ्रीका में नहीं देखते, इंग्लैंड में नहीं देखते। लाइक दिस इज वेरी मोर लाइक देन एक बार पॉलिटिक्स आया था, फिर बॉलीवुड आया था, फिर कोई तो भी आया था, फिर इन्हें बोल देता। A lot of people can say a lot of things in Indian cricket. वही problem है। अभी renovate किया है, roofs all over the stadium है। Oh, we'll go check it out, man. I'll go check it out. Hopeful Stadium. Yeah, I didn't know this. Yeah, but yeah, overall, I mean, yeah, I can't wait counting around the days. Hopefully, अभी थोड़े दिन में start शुरू कर देंगे, start देखेंगे bit by bit। T20 के साथ start करते हुए, me Mustafa will get into the mix of things, get more and more content, get more and more updates in coming down. And again, another series, beautiful series, Pakistan Australia will be starting in a couple of days. Looking forward to that. कल बांग्लादेश वाले न्यूजीलैंड का फर्स्ट डे है। If you guys want to see that, because it'll be another turning wicket, it'll be fun to see Kane Williamson probably get another century. But yeah, stay tuned to chasing the target. Till then, everybody, thank you so much for joining us. Sudeep Dada, Karthik bhai, Ibrahim bhai, Abhit bhai, जो भी हमारे साथ ज्वाइन करे, thank you so much and good night.